ठीक है। अब हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर। ओके सर। यस सर, यस सर। सर डोंट वरी, लिंक विल कम सून, डोंट वरी। यस सर। Yes, sir. No, sir, there's no schedule. There's class today. Don't worry. Yes, sir. Yes, yes, sir. Within 5 minutes, sir. Don't worry. Because actually, sir, I am attending some course today, so that's why I'm on the. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 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 okay. Okay, thank you. अभी ज्वाइन किया मैं, लिंक तो मैंने को भेजा है। हाँ, भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ नहीं घूमने भाई। मेरे को अविरल ने गान दे दी। ये हुआ ना।
Hello. Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Please write me in chat. Okay. So I am your bootcamp manager, and sir will be there soon. So I'm going to introduce myself. I am Rishabh, and so we are going to learn basics of options trading today, and we will discuss your schedule also today. आज आप सभी का शेड्यूल भी डिस्कस होगा जो आप आसिम सर के साथ क्लासेस अटेंड करने वाले हो. अनम्यूट किया जाएगा जब आपको क्वेरीज होंगी. आपकी सारी क्वेश्चन आंसर्स आपके एंड में होंगे सेशन के, तो डोंट वरी अबाउट दैट. यस सर, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, डोंट वरी. एम आई नॉट ऑडिबल? सर आपकी मीटिंग रहेगी 7 to 9. ओके, थैंक यू सो मच. So I am going to share your schedule with all of you.
Please confirm me. Are you able to see the schedule? Okay. So today is our first class with Asim sir, and our today's topic is like basics of options, and our next class will be on Saturday, like on tomorrow. So that will be there soon. Okay, 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 okay. Now it's visible, guys. Uh-huh. 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 Okay, okay, okay. Hello. Hi guys. Is my voice audible? Aseem here. Good evening. Yes, sir. Audible, sir. Okay, great. Thank you. Meko, please make me co-host.
Please make him Yes. co-host. I think you are now co-host, sir. Okay, thank you. So hi guys, let's quickly start. So how I would generally do is what I will be using a Google Sheet. Okay, and by the end of the session, I will be sending you that Google Sheet. I will also be using a presentation, but I will not be reading that presentation. You will get that presentation. Okay, you will get the presentation after the session, so that you can go through it at your own pace. मैं दोनों चीज पे बोलूंगा, मैं पहले इंग्लिश में बोला करूंगा, फिर मैं हिंदी में बोला करूंगा, ठीक है? Great, so let's start. तब तक do you want to show any schedule? Do you want to show any schedule, Rishabh? Rishabh, do you want? आप जल्दी से दिखा दो. Let's quickly start. Yes, sir. अगर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो तो मुझे भेज दो, मैं सिखा दूंगा. आई कैन शो इट टू यू. ओके सर, ओके. मुझे आप मुझे व्हाट्सएप कहीं भेज दीजिए. ठीक है, थैंक यू. आई गॉट द शेड्यूल फ्रॉम यू. लेट मी जस्ट शेयर इट नाउ. ठीक है, सो माय स्क्रीन शुड बी विजिबल. आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. यहाँ पर देख लीजिए. सो इट्स नॉट वेरी क्लीन, बट एनीवे मैं आपको बता देता हूँ. आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे, टुमारो एंड संडे. टुडे, टुमारो एंड संडे, ठीक है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे यू विल हैव क्लासेस विद मी. So you'll have classes with me at 7 o'clock. 7 p.m. to 8:30 p.m. is the official time, but generally हम लोग देखते हैं कि थोड़ा extend हो जाता है. So at least have 30 minutes extra buffer. Okay, this is today, tomorrow, and Sunday. Monday and Tuesday you have Python installation. आप लोग अपने आप कोई भी install मत करिए. Do not install on your own. Okay, please come for the session on Monday. The timing will be confirmed. It will start early, but it will go on for longer time. Basically, we'll do it in batches. Okay, so आप कोई भी batch में join कर लीजिएगा. Generally, it will take you only 30 to 40 minutes maximum if you do it correctly. So on 6th, on Monday, it will be a lot of people. So my colleague Ajay will be there. He'll be helping to do that. 6th को अगर नहीं होता है, okay, so आप ये मान के चलो out of the 100 people maybe 10 लोगों का नहीं हो पाएगा. Okay, out of those 100 people there might be some issues for those 10 people. For those 10 people we'll have another session on 7th, on Tuesday, which will be a one-to-one session. मैंने बताया कि मैं पहले सब कुछ इंग्लिश में बोलूंगा, फिर मैं हिंदी में बोलूंगा. Okay, so don't worry. So 7th को will be a one-to-one session where again my colleague Ajay will be helping you one-to-one to make sure that your Python is installed. Our target is that by 7th, which is Tuesday, everyone's computer should have Python. That's the target. Okay, and then you can see we have another class on 8th with me, and जो आपको 10th की क्लास दिख रही है, that is with equity mentor. That is not with me. That is with someone who, a separate mentor from TFU. ठीक है, मैं जल्दी से आपको हिंदी में बता देता हूँ. आज कल परसों फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी क्लास मेरे साथ है 7 o'clock, 7 to 8:30. बट प्लीज आधे घंटे का आप अपने पास रखिएगा एक्स्ट्रा बफर. 9 बजे तक क्लास खींच सकती है. मंडे एंड ट्यूसडे हमारी इंस्टॉलेशन होने वाला है. आप लोग अभी कोई भी इंस्टॉलेशन अपने आप मत करिएगा. कोई भी पाइथन वगैरह आप अपने आप इंस्टॉल मत करिए. वो सारे के सारे हम लोग आपको करवाएंगे. मंडे को हम लोग जो क्लास करेंगे वो 5 बजे से शुरू हो जाएगी, बट वो 1-1 घंटे के बैचेस में होगी. तो आप कोई भी 1 घंटे का बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. इट विल टेक अराउंड 30 to 40 minutes. 7th को हम केवल उनको बुलाएंगे जिनका कोई ना कोई इशू आया है, मंडे को उनका इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्यूसडे की क्लास छोटी होगी, बहुत छोटे लोग, कम लोग होंगे, मे बी 10 से 15 लोग होंगे बस. देन नेक्स्ट वीक अजीत, अगर आपने अब इंस्टॉल कर लिया है, कीप इट विद यू. बेटर विल बी अनइंस्टॉल.
आप लोग, मैंने आई हैड मैसेज इट ऑन द ग्रुप आल्सो गाइस, अगेन मैंने आपको ग्रुप पे भी मैसेज किया हुआ था सब लोगों की, डू नॉट इंस्टॉल, ठीक है, बिकॉज अगर आप लोग इफ यू डू इट ऑन योर ओन एंड इफ यू डू नॉट डू इट करेक्टली, देन बाद में इशू आएगा, ओके। एंड देन वी हैव मोर क्लासेस, मेरे साथ जो आपकी क्लास होंगी दैट विल बी ऑन 9th, which is the Wednesday, and Friday वाली जो क्लास है that is not with me, that is with TFU's another mentor, ठीक है। Will Jupyter collab work? No, it might work out, but I cannot guarantee you if it will work for all the brokers, ठीक है। No, we will be helping on Windows. For Mac you'll have to do what is called the, I don't know what the, you'll have to install Windows as well. No, don't have to uninstall Anaconda. Rajat, you don't have to uninstall Anaconda. Obviously, if someone is a Python developer, then keep it installed. Then it's fine. Okay. So that's the general agenda. Or all the IDE which will be installed is VS Code, Visual Studio Code. But again, please do not install on your own. I mean, we can install it on 2 systems. It doesn't matter. Okay. So I hope this is clear. All the sessions with me will start at 7 p.m. ठीक है। यहाँ पर कोई questions? Any questions here till now? I hope no questions. ठीक है। अब the way I will like to conduct, पहले मैं आपको बता दूं कि who you have to ask if you have questions. Okay, who you have to ask if you have questions. Let's answer that. Any question, okay? Any question related to content. Content means anything related to options or any question related to programming, Python, you have to ask me. You'll have to ask me. Any question related to administrative work. Any question related to administrative work, you'll have to ask the TFU team. So TFU is the future university, जो अलग-अलग courses करवाती है. They have a lot of mentors, they have a lot of faculty. I am one of the faculty with them. Okay, I'm one of the faculty. So basically, I am an external faculty. So any questions related to administrative work, for example, the recordings, right? The recordings that comes under administrative work. So do not ask me because I do not have the access to the recordings. So recording का access उन्हीं के पास होगा. They will only be able to upload it onto your WhatsApp group. Okay, but any question that you might have related to the content or related to programming, you can ask me. So either you can DM me. So everyone has my number. It's on WhatsApp. If not, we will be putting a Google link. We will be putting a Google link where you can ask your questions. Okay, great. So let's start. बाकी आपको ये जो schedule है, it's already on your WhatsApp group, so you can check it. Please, administrator number and name. Kumaraswamy, you can take it from the WhatsApp group. You can either message Mr. Rishabh or Mr. Harman. Rishabh, आप दोनों के number please डाल देंगे group पे, या फिर just put it on the WhatsApp group. It will be easy for everyone to. Okay, sir. Sure, sir. ना अपना भी डाल देना, आप हरमन का भी डाल देना. Okay, sir. Lovely. So let's start. All right, so this is TFU 1 3rd Feb. ठीक है, आज का जो agenda है आपको बता देता हूँ. So we'll be, what is this? We'll be talking about the options. Okay. Before I go further, let's quickly do this. No tips will ever be provided. Okay, no tips will ever be provided. I'm not in the business of giving tips. This is not a software, right? This is a code learning course. So by the end of the course, you should be able to learn Python and execute on your own. As you would know, we are trading in options. There are no guarantees of any profits or any returns. This course will not make you a Python expert, as I've mentioned in the masterclass as well. This, I would say, is a basic course because we only have 5 to 6 classes, but we would try to teach you as much as possible. Okay. My sincere request to everyone would be to join all my live classes, ताकि आपके जो भी question हो, at least I can answer them. In case you missed one of my classes, please go through the recordings. Python ki recording to definitely, I would say, one second, let me just make this mute. It's a little annoying. Python ki jo
क्लास है, I would say even if you come for my class, go through it once, because what I've noticed is that a lot of times you will ask the question which I've already answered during the class. Okay, so please go through it once. I will be showing you some of the strategies that I trade, और उसका मैं backtest result भी दिखाऊंगा. But again, there is no guarantee that the similar results will be possible in the future. End goal is that you can create your own strategies so that your risk and your reward can be based on your psychology. And again, as I'm saying, telling you that very important that you please come for all my classes. And the other things are the important, the normal things that algo trading is, it depends on the profit and responsibilities all yours. We don't take any responsibility of that. Great. So let's start with that. So सबसे पहले हम बात करना है, okay, as I said, I will not be going through the PPT. Okay, you can go through the PPT. Start करते हैं. So a very simple question. Okay, again, I like to make this an interactive. ठीक है ना, one way traffic नहीं होने वाला है. It's going to be interactive. So I would like you to please participate. Let's say I want everyone knows what short selling is. Everyone knows what short selling is. कोई है जिसको short selling नहीं पता है? किसी को जिसको short selling नहीं पता है? कोई है जिसको short selling नहीं पता है? Okay, there are a few. ठीक है? ठीक है, मैं बताता हूँ. देखिए, let's say अब अदानी का एग्जांपल लेते हैं ना, वेरी सिंपल एग्जांपल, अदानी. Okay, let me. Okay, every example that I will be taking will be live examples only. ठीक है, तो मैं आपको I will not be going in future to find exact reasons ताकि मैं आपको दे सकूं. मैं एकदम live examples आपको दिखाऊंगा हर बार. So let me just log into my अदानी. ठीक है, अब आप देखो, अगर everyone knows about what is happening with Adani, right? It is falling like a pack of cards. ठीक है ना, तेजी से नीचे गिर रहा है. बट अगर हमें यहाँ पर सेल करना है, मान लो इफ यू फील दैट अदानी इज गोइंग टू गो डाउन टुमारो और मंडे, अगर आपको लगता है कि अदानी एंटरप्राइजेस कल गिर जाएगा और गिर जाएगा कल, तो आप क्या कर सकते हो? आप सेल कर सकते हो क्या स्टॉक? कैन यू सेल अ स्टॉक पोजिशनली? कैन यू सेल अ स्टॉक पोजिशनली? अगर मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करता हूँ लॉन्ग टर्म में, नॉट इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, एंड इवन इफ आई डू वन क्वांटिटी, लेट्स से आई डू सेल, चलो इसमें तो अभी मार्केट क्लोज कह दिया. प्लीज स्विच ऑफ ऑल वीडियोस. हाँ, मे बी एवरीवन कैन स्विच ऑफ देयर वीडियोस, इट विल बी इजियर, दैट्स फाइन. बट what I'm saying is that if you want to sell equity, right, if you want to sell equity positionally मतलब not intraday, आज सेल करके मैं कल उसको वापस एग्जिट करना चाहता हूँ, that's not possible. Okay, it's not allowed, it's not possible. इसके लिए अब हमें फ्यूचर्स में जाना पड़ता है. So that's the first thing. We'll talk about what futures is. Basically short selling आप अलाउ हो जाती है. Okay, futures से short selling अलाउ हो जाती है. So what is short selling? Basically I want to sell first and then buy later. आप स्टॉक मार्केट में पहले कुछ चीज बेच सकते हो, आपके पास कुछ नहीं भी तब भी आप पहले बेच सकते हो, फिर बाद में उसको बाय कर सकते हो. आप ऐसा क्यों करोगे? लेट्स से अभी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है. Okay, let's say the current price is 100 rupees. So you sell it at 100, and when it goes down tomorrow, when it goes down to 80 rupees, you buy it. So did you make a profit or loss? You made a profit, right? Because you sold it for 100, but you bought it for 80. That means when the market is going down, you can actually make money, right? अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है म्यूचुअल फंड से. Can you make money in mutual funds if the market is going down? Can you make profit in mutual funds if the market is going down? No, you cannot. Why? मेरी स्क्रीन एकदम सही चल रही है. अगर आप लोगों को ये ब्लैंक दिख रहा है, प्लीज रीजॉइन. म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? We talk about mutual funds, they only have equity. No, mutual funds cannot trade on options. No, they can, technically they can, but they don't. Okay, technically they can, they can, but they can't use leverage, so they don't use options. But mutual funds, if you open any mutual fund, right, उनके क्या component होते हैं? They have a lot of stocks, correct? They have a lot of stocks. They might have bonds, things like that. Treasury, इस तरह की चीजें होती हैं उनके पास. But all these equity, bonds, T-notes, right, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी equity के अंदर आती हैं. जो हमने कहा कि
यू कैन नॉट सेल फर्स्ट, ये सारी को आप सेल पहले नहीं कर सकते। अगर आप इनको सेल पहले नहीं कर सकते, इफ यू कैन ओनली बाय आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड, हाँ विल टॉक अबाउट आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। इनमें सिंस यू कैन ओनली बाय, राइट, सिंस यू कैन ओनली बाय, you will make money only if the price, if nifty goes up, if basically the market goes up, correct? But when you trade in futures and when you trade in options, you can actually make money when the market is going down, क्योंकि हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ये शॉर्ट सेल होता है, हम सेल पहले कर सकते हैं, बाय बाद में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? So that's the first reason why futures came into existence, because you can make money when market is going down. Okay, now let's talk about what is a future. Let's take an example. मैं आपको निफ्टी फ्यूचर दिखाया था, मच इजियर। दिस इज निफ्टी फ्यूचर, ओके। अब निफ्टी फ्यूचर में थोड़ा डिफरेंस है, और लेट्स टॉक अबाउट अदानी फ्यूचर। there's a slight difference between Adani and Adani Feb future, okay? अब पहली चीज आप ये देखो, आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज द अदानी चार्ट। मैं आपको पहले अदानी का चार्ट दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको अदानी फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ। कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? कैन यू सी एनी डिफरेंस? या फिर कुछ सिमिलरिटी लग रही है? कैन यू सी कि ऑलमोस्ट सिमिलर है चार्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, राइट? दैट मीन्स देखो, अदानी जो है, व्हेन यू बाय अ स्टॉक, you are investing, not exactly, but almost same. When you're buying a stock, when you're buying Adani, you are investing in that company. Okay, you are basically आप उनके shareholder बन रहे हो, you're becoming a shareholder, चाहे वो 0.0000% के हो, but you are a shareholder of that company. And आपको जो भी एक normal shareholder के जो भी benefits वो आपको मिलेंगे. That means whenever they give out dividends, you'll get your money. जब भी अगर stock बढ़ेगा, you'll get that money. Whenever there is a bonus, you'll get that much bonus. Whenever there's a stock split, you'll get extra stocks. मतलब normal आपको अदानी एंटरप्राइज की सारी चीजें मिलेगी। बट फ्यूचर क्या होता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, इसमें आप देखेंगे एक तो लिखा है अदानी एंड इज, दिस इज द फ्यूचर ऑफ अदानी एंटरप्राइज। फेब लिखा और फिर एफयूटी लिखा है, एफयूटी इज फ्यूचर। नाउ फेब मींस क्या है? सिंस दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन एक्सपायरी डेट, इसकी जो एक्सपायरी है वो फरवरी की है, वो फरवरी की एक्सपायरी। नाउ व्हाट डज दिस फरवरी मीन? इफ यू गो टू योर कैलेंडर, इन इंडिया जो भी स्टॉक के फ्यूचर्स हैं, उनकी एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। सो इफ यू टॉक अबाउट February, that's 23rd February. तो 23rd February को this future will cease to exist. ये 23rd के बाद आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे। 24th से आपको मार्च फ्यूचर में आना पड़ेगा। So 24th February से अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मार्च में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? That what this Feb means. ठीक है? So if we talk about Nifty, let's talk about Nifty futures. There's a Nifty future here. Even this will get finished on 23rd Feb and 24th आप ट्रेडिंग कर सकते हैं नेक्स्ट वाले की फॉर मार्च। क्लियर हो गया यहां तक? फ्यूचर क्लियर हो गया? डिफरेंस क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल, वन मोर डिफरेंस। मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूं एंड जस्ट सी द क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूं इंट्राडे में, जस्ट सी द क्वांटिटी। इफ आई इंक्रीज इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 रुपी। मैं बस जनरल इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है? Now let me try to buy Adani future now. Oh, this is starting with 250 and going in multiples of 250. I cannot buy one. Can you see the difference? Adani end में, when I was doing the stock, I could buy one stock. One quantity. But when I'm doing a future, I have to buy in lots of 250, right? इसको बोलते हैं lot size. This is called lot size. That means when we are trading in futures and options, you can only buy a minimum of one lot, and one lot will depend. हर stock का अलग अलग lot size होता है. In case of Adani Enterprise, this is 250. अगर हम निफ्टी का देखेंगे, that's 50.
50 के उसमें होगा. अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे that will be 25. Clear हो गया difference? So the next difference is lot size, and the third difference is margin. Third difference is margin. So let's talk about that. Let's say I want Reliance का example ले लेते हैं. Let's say I want to buy Reliance. अच्छा, एक again I will again a blanket answer. I will only answer those questions which will help us to make money. I will only answer those questions which will help us to make money. I will not answer questions which will help us to become analysts. I'm not an analyst. I'm a trader. I'm not a analyst. That means I don't go on news channels after 3:30 to tell why it happened. I have to take the trade at 10 o'clock. So a lot of times you might ask a question. I'll say that doesn't matter. I don't care. I hope that's fine with everyone. I hope that's fine with everyone. We are here to become traders, or we are here to become analysts. Correct ना? देखो, again, I will be very pinpoint. कुछ चीज मुझे नहीं आती होगी, मैं आपको वो भी बोल दूंगा that I don't know. ठीक है? I'll tell that I don't know. Sorry, I'm not the right person to ask that question. But I will tell you things जो मुझे आती हैं, बस मैं वो ही बता सकता हूँ. ठीक है? Great. Reliance. Let's say I want to buy Reliance stock. Let's say I want to buy Reliance stock. Quantity 250. Let's see what is the price. Reliance is at 23.29. 23.29 at a price of 2329. So what will be my total investment? What will be my total investment? 250 multiplied by 2329. That's around 5.8 lakhs. 5.8 lakhs. Check कर लेते. तो मैं यहाँ पर अगर 250 क्वांटिटी डालता हूँ लॉन्ग टर्म में 5.8 lakhs. 5.8 lakhs. You can see at the bottom margin दिख रहा होगा आपको 5.82 lakhs. ठीक है? That's the amount of money I need if I want to buy 250 Reliance for positional buying. But if I want to do the same thing with Reliance futures, positionally, if I want to buy 250, look at the margin. 1,08,000. 1,08,000. So same thing, 250, 1,08,000, and what is the price? 2,343. So this is the Reliance future. So you can clearly see one more difference, that this is called the extra margin that you're getting. This is called the extra margin that you're getting. It's almost 5x. It's almost 5x. That means you can buy a future. आप future buy कर सकते हो 1 लाख रुपए देकर positionally, और आपको तब भी 250 quantity मिल जाएगी. But for buying a stock of the same 250 quantity, you'll have to pay almost 6 lakh rupees. Next difference. 3 difference हो गए clear? Are all the 3 differences clear? Are all the 3 differences clear? ठीक है. Fourth difference. Now this is especially for those जो future trading करते हैं. Okay, जो future trading करते हैं. Why I don't like trading in futures? If you remember, मैंने आपको ये बताया होगा during our first session, that I don't trade in futures. अब मैं आपको उसका reason बताने वाला हूँ. Exact reason why I don't trade in futures. ठीक है? Let's say I want to buy Bank Nifty. Yes, exactly, Bhaskar. Let's say I want to buy Bank Nifty futures. ठीक है? Bank Nifty model trade करते. Let's say I want to buy Bank Nifty futures at 41684. 41684. So I want to buy 25 quantity. Sorry, 41684 is the price. Let's say I will buy it at same price and sell it also at the same price. Same price पे buy के sell के दोनों same कर दिया. And 25 quantity because that is the lot size. Okay. Now please see what is the cost. अगर मैंने same price पे buy किया और same ही price पे sell कर दिया, केवल एक lot, only single lot, only one lot. What is my cost? 223. Let's say आप कहते हो नहीं सर एक quantity हम let's not do one lot, let's do 10 lots. Let's do 10 lots. For 10 lots, I am spending 1,800 rupees.
1800 रुपीज को खर्चा होना ही होना है, चाहे प्रॉफिट आए या ना आए. दिस इज द बेयर मिनिमम लॉस दैट यू हैव टू बेयर. ये वाला पॉइंट क्लियर है, फ्यूचर का एग्जांपल क्लियर है. अब मैं आपको यही सेम चीज ऑप्शन में करके दिखाऊंगा. We'll talk about what options are, but I'll quickly give you a glimpse of difference between a future and an option. ठीक है, 1800 की कॉस्ट आ रही है. So my bank nifty future cost is rupees 1813. यहीं पे what I can do is there is something called synthetic future. Again, what it is, we'll discuss about it, but you can create a synthetic future. You can understand from the word, right? It acts like a future, but it's not a future. Synthetic future is made by doing options. ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं आपको बाद में बताऊं when we go into options, but I'll quickly tell you how it's done. 41684 है, right? Current price 41684. So what we can do is we can do 41700 call and 41700 put. हम ये दोनों को कर सकते हैं. Okay, दोनों को हम बाय और सेल करेंगे. Basically, how we'll do, don't worry. But I just want to show you the cost comparison. The total price is coming as 308 and 460, which is 768. 768. Okay, let's go here. So we'll do 768 पे बाइंग करी, और we'll do it individually. Confusion नहीं होगा. 308 पे बाइंग करी, 308 पे सेल कर दिया, and again 250 क्वांटिटी, राइट? इसकी कॉस्ट आई मेरी 184 रुपीज. इसकी कॉस्ट है, दिस इज कॉल. सो कॉल की कॉस्ट आई मेरी 184 रुपीज, एंड लेट्स पुट की कॉस्ट 460. सो दिस इज 460 460 250 252 रुपीज. 252 रुपीज. ओके, दिस इज पुट कॉस्ट. तो मैं टोटल ऑप्शन कॉस्ट इज 300 400 436 436. Now can you see the difference? This option, right, the combination of these two will move similar to futures. Okay, will move similar to futures. This combination will move similar to futures, but futures mein you are spending 1813 rupees. In options you are spending 436 rupees. Can you see the difference? Can you see a very क्लियर कट डिफरेंस कि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको महंगा क्यों पड़ता है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? डोंट वरी कि मैंने यहाँ पे ये कॉल और पुट क्यों डाला है, वील डिस्कस अबाउट दैट, बट द नंबरिंग्स क्लियर हो गए. इसके अलावा भी दिस इज ओनली द हाफ द पिक्चर. दिस इज ओनली हाफ द पिक्चर. जो स्लिपेज है, जो स्लिपेज है फ्यूचर्स में इट्स हाई, whereas options में it's low. Okay, तो इसकी कॉस्ट अलग आएगी, इसकी कॉस्ट अलग आएगी. Zerodha is not free brokerage. Ramakrishna, no. Zerodha is not free brokerage. ठीक है सर, अगर कोई होल्ड कर रहा है तब भी सेम है. मैं मोइन सेम है, डजंट मैटर. मैं आपको होल्ड के एग्जांपल से दे रहा हूं. स्लिपेज वगैरह डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, फ्यूचर एक्सपायरी मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम. मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्यूचर का, फॉर एनी फ्यूचर यू विल हैव टू, सिंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, देन उसकी एक एक्सपायरी होती है. इन दिस केस दिस इज रिटन February, FEB, फेब. ओके, उस केस में फेब मतलब होता है 23rd, जो भी लास्ट थर्सडे है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, विच इज 23rd Feb, राइट? दैट विल बी द एक्सपायरी. मतलब ऑन 23rd 23rd February 3:30 के बाद आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे. दिस विल नॉट बी देयर. रामकृष्ण, अगेन प्लीज सी द कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज इज नॉट दैट हाई. सी, आउट ऑफ दिस 1800 रुपीज द कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज इज ओनली 40. bulk of your cost is this, which is a government tax. You cannot help it, whether it's FinWage or whatever. Similarly, in options also, this is 40. This is fixed. But bulk of your costs are government taxes, which you cannot reduce. It doesn't matter on which broker you're trading. ठीक है, आगे चलें. Any questions? Any questions so far? If not, let's go forward. Awesome. Let's go forward.
ठीक है. So that's all. Nifty future expiry also same. Yes, Nifty future expiry also same. Bank Nifty future expiry also same. और कुछ है? Good teaching, simple. Thank you. Let's go. Let's keep going forward. ठीक है. Speed is okay. Speed is fine. You want me to make it faster, slower? बता दीजिएगा आप मेरे को. ठीक है. ठीक है. Of course, जो लोग को already F&O का basics पता है, it might be a little boring for you, but our first class is obviously going to be a little basic. Lovely. Let's start. Next हम बात करने वाले हैं. Let's हम बात करने वाले हैं options क्या होता है. So that's it. That's all about futures that I want. Quick recap. Sir, recap के लिए video मिलेगी ना? Please go through the video. That's why the videos are there. But taxes and currency F&O are low compared to equity. नहीं sir, Bhaskar, no. Even Nifty F&O, right? Your Nifty futures is going to be much more expensive than your options. ठीक है ना? Even in Nifty, I'll show you example. Let me show you Nifty also. Synthetic future क्या होता है वो बताऊंगा. उसको भी मैं बताऊंगा. Don't worry about that. Okay, don't worry about that. So let's start with options. ठीक है. Let's start with options. ठीक है. So we discussed about futures. अब options क्या होता है? Option is second level. So first level हुआ Adani to Adani Enterprise future, मतलब Adani Ent to Adani Enterprise future. This is the first level. Now we're talking about Adani Enterprise future to option. ठीक है, मैं Adani का example लूंगा. Let's take Nifty example. It's much easier. So I'm just adding this. What I've added is an option. This is an option. This has 4 parts to it. ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं. Let's talk about ये क्या 4 पार्ट है. Okay, मैं लिख देता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए. Nifty, then it's written 9th Feb, then it's 17,800, then it's C. ये 4 चीज लिखी. If you see this, Nifty 9th Feb 17,800 CE. मैंने वही चीज यहां लिख दी. इसमें 4 पार्ट हैं. ऑप्शन में 4 पार्ट होते हैं. 4 पार्ट से एक ऑप्शन बनता है. ठीक है. ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन भी स्टॉक मान लो आप. ऑप्शन इज ऑल्सो अ स्टॉक, राइट? जैसे रिलायंस है, लाइक यू कैन ट्रेड रिलायंस, राइट? अभी रिलायंस का प्राइस क्या है? 2329 प्राइस है. इफ आई वांट टू बाय इट, आई विल बाय इट एट 2329. सिमिलरली दिस ऑप्शन इज ऑल्सो लाइक अ स्क्रिप्ट. इट्स कॉल्ड अ स्क्रिप्ट, राइट? यू कैन बाय इट. इसका भी प्राइस होता है 130 में नॉर्मल, जैसे आप किसी स्टॉक को बाय सेल करते हो. सिमिलरली यू बाय और सेल एन ऑप्शन. ठीक है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है. इस जैसा कि इसकी डेफिनेशन क्या है हम बात करेंगे, एंड व्हाट डज इस 131 सिग्निफाई हम वो बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट डज द प्राइस ऑफ रिलायंस सिग्निफाई? This signifies कि this is the current price of Reliance. Correct? अगर हम कोई भी fundamentals देखते हैं तो this is the, based on this you'll find out what is the market cap of Reliance. Based on this you'll find out what is the PE value of Reliance. So this is the price which is getting traded. इसी पे buy कर सकते हो, इसी पे sell कर सकते हो. Similarly, options में भी यही होता है. This is the price 131 which is currently being traded. आप इसी पे buy कर सकते हो, इसी पे sell कर सकते हो. Obviously during the day it will keep changing. You can see it kept changing during the day. ठीक है, बट लेट्स फर्स्ट सी व्हाट डज दीस 4 थिंग्स मीन. सो पहली चीज तो निफ्टी, वेरी क्लियर. निफ्टी का मतलब है कि निफ्टी का ऑप्शन है. ये निफ्टी का ऑप्शन है. ठीक है, सो निफ्टी मींस ये निफ्टी का ऑप्शन है. सिंपल. किस स्टॉक का ऑप्शन है? सारे स्टॉक्स के ऑप्शन नहीं होते. सिमिलरली सारे फ्यूचर्स के ऑप्शन नहीं होते. लेट मी एक्चुअली ऐड दैट हियर. नॉट ऑल स्टॉक्स विल हैव फ्यूचर्स. अराउंड 200 जो टॉप इंडिया के 200 कंपनीज हैं, उनके ही फ्यूचर्स होते हैं. ओके, अराउंड 200 स्टॉक्स विल हैव फ्यूचर्स, नॉट ऑल. इसका रीजन भी है. इसका रीजन ये है कि इफ यू गेट फ्यूचर्स ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज, ठीक है, अगर छोटी कंपनी का आप फ्यूचर लोगे, अगर होएगा, तो उसमें क्या कहते हैं, you might see, because the trading is not being happening so much, there'll be a lot of pumping and dumping happening. Okay, pumping and dumping हो जाएगा because people can make money by selling also. So that is why they don't do futures for all the stocks. ठीक है, करीब top 200 stocks के futures होते हैं, and those are called F&O stocks. They keep changing also. I think the change happens 2 times in a year, but that's again not that important. So this means that इसका जो ऑप्शन है, निफ्टी का ऑप्शन है,
9th Feb. Now 9th Feb is the expiry. बट आप पूछोगे यार अभी असीम यू सेड की एक्सपायरी तो 23rd Feb है. प्रॉब्लम क्या है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर टू इंडेक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये हमारे दो इंडेक्स हैं. इन दोनों की जो एक्सपायरी होती है, इनकी दो तरह की एक्सपायरी होती है. टू काइंड्स ऑफ एक्सपायरीज. वन इज कॉल्ड अ वीकली एक्सपायरी, which is every Thursday of the week, every Thursday, and one is monthly expiry, which is same last Thursday of the month. So if you see 9th Feb क्या है, is it the current week माना जाएगा ना 9th Feb, because we have our last expiry was yesterday 2nd Feb. From 3rd Feb to 9th Feb, this is called the current week. Because 9th को Thursday हो जाएगा. So we are in the current week of 9th Feb. So this is current week expiry. यहाँ पे कुछ confusion तो नहीं. This is current week expiry. मतलब on 10th Feb, this option और ये this जो भी आप script, you cannot trade from 10th Feb. Clear हो गया? Expiry clear है सबको? Anyone who is not clear with the expiry? ठीक है, गुड. तो 9 Feb हमारी एक्सपायरी हो गई. 17,800, दिस इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही इसमें है. सो आई स्पेंड नेक्स्ट 30 minutes on what is this strike price. What will be the value after? Nothing. Sambhaji, nothing. You cannot trade ना. There will be no value. आप ट्रेड ही नहीं कर सकते उसमें. ठीक है ना. And the last is called CE. This is call option. ठीक है. So या तो कॉल होगी या पुट होगी. We'll discuss की डिफरेंस क्या है. But this is the call option. तो सबसे पहले बात करते हैं कि what does call and what does put mean. Call option होता है. Let's take an example. And then we'll talk about what does this strike mean. पहले call option बात करते हैं, then we'll talk about the strike. See this, I'm showing you 17,800 call. Just remember how the chart looks like. और मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा. Can you notice something again? कुछ चीज नोटिस कर रहे हैं? Can you see something? That when Nifty is going up, call is going up. When Nifty is going up, call is going up. Almost similar चल रहा है. ठीक है? That means if you feel that Nifty is going to go up, you can buy a call option. क्यों? मान लीजिए जब Nifty, assume when Nifty was somewhere here, यहाँ पे नीचे आज during intraday, you felt that this is an important support, यहाँ से Nifty ऊपर चले जाएगा. So what you could have done? You could have bought a call. तो अगर हम कॉल पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, राइट, यहाँ पे बाइंग करते तो प्राइस वाज 60 रुपीज, एंड सिंस निफ्टी वेंट अप, कॉल ऑप्शन वेंट अप, इट वेंट फ्रॉम 60 to 130. दैट मींस पैसा डबल. वेरी इजी, पैसा डबल हो गया 60 to 130. बट द जोक्स अपार्ट, idea is that when Nifty went up, call also went up. That means if you have a bullish bias, we can buy call option. Clear हो गया इतना पार्ट? So call option is bullish bias. Let's talk about put option. तो मैं आपको put option दिखा रहा हूँ. So PE is put option. Hello sir. आप बताएं. Sir, sorry to interrupt sir. May I have 2 minutes sir? बताएं. Sir, actually मुझे students के साथ share करना है. I want to share a Google form in which there's some description for them. Like जो बंदा ट्रेडर भी है, कोडर भी है, उसमें like इस तरह के ऑप्शंस हैं. तो सर वो फॉर्म फिल कराना है स्टूडेंट से. तो सेम लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ अभी यहाँ पे गूगल फॉर्म का, और सेम मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर करूँगा स्टूडेंट्स. तो please be active and fill the form according to you. It will help you a lot. So continue sir. Thank you sir. Okay, thank you. So maybe
वी कैन टेक 1 मिनट ब्रेक. 1 मिनट में आप लोग प्लीज कर दीजिए. लेट्स डू इट 1 मिनट. अभी खत्म कर देते हैं. इट विल टेक ओनली 1 मिनट. व्हाट इज, लेट मी चेक हाउ बिग इज द फॉर्म. You need permission. Okay, it doesn't have permission. I think it doesn't have permission. Rishabh, hi. Yeah, बाद में कर लेंगे. ये बाद में कर लेंगे. I'll keep going forward. Okay sir. ठीक है ना, आप एंड में करवा लेना. Okay. अब मैं आपको पुट दिखा रहा हूँ. Now I'm showing you put. Now I'm showing you put. Okay, this is the put option. Again, compare it to Nifty. This is Nifty. This is put. This is Nifty. This is put. कुछ दिख रहा है आपको? Opposite लग रहा है, एकदम opposite. When Nifty is going up, put is coming down. When put is going up, Nifty is going down. दिख रहा है ना difference? ठीक है? So how can we use it? Now let's talk about how can we use it. Let's say आपने निफ्टी को देखा, यहां पर ओपनिंग जो आज फर्स्ट 5 मिनट कैंडल थी, एंड यू फेल्ट कि यार यहां से तो गिरने वाला है. अगेन कैसे गिरने वाला है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. यू फेल्ट दैट यहां से गिरने वाला है. तो अब आप क्या कर सकते थे? व्हाट वर आवर ऑप्शंस? आवर वन फर्स्ट ऑप्शन वाज कि वी कुड सेल अ फ्यूचर. वी कुड सेल अ फ्यूचर, जो हमने बात करी, हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं. और वी कैन बाय अ पुट. वी कैन बाय अ पुट. तो लेट्स सी कि अगर हम बाय करते तो क्या होता. फर्स्ट कैंडल में बाय करते, अगर हम यहां पे बाय करते तो प्राइस वाज 246 एंड इट वेंट टिल 340. 100 रुपीज का प्रॉफिट आ जाता. क्लियर हो गया? ऑपोजिट चीज क्लियर हो गई. सो व्हेन यू आर बुलिश यू कैन बाय अ कॉल, व्हेन यू आर बियरिश यू बाय अ पुट. दोनों में बाइंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूं. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. अब यहां पर इफ यू आर, इसका ऑपोजिट भी होएगा. दैट मींस इफ आई एम बियरिश, can I sell a put, sell a call? Let's take an example. Let's say same example. निफ्टी पे आए, फर्स्ट कैंडल मुझे लगा यार मार्केट नीचे गिरने वाला है. आई फील द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. तो मैंने कहा एक तो मैं बाय कर सकता हूं पुट को, बट आई कैन ऑल्सो सेल अ कॉल. क्योंकि बाय कॉल कर रहा हूं तो बुलिश हूं, तो सेल कॉल करूंगा तो बेरिश हो जाऊंगा. ठीक है? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेल अ कॉल. लेट्स सी इफ दैट वर्क्स. तो मैं कॉल पे आता हूं. I could have sold it for 100 rupees. See, I could have sold it for 100 and bought it at 55. Did I make money by selling a call? Did I make money by selling a call because market went down? ठीक है? Confusion नहीं है ना यहाँ पर. So when I was bearish, I could buy a put or I can sell a call. Or I can sell a call. नहीं, Bipul, no, they are not same. हम वो डिस्कस करेंगे. But I hope this is clear. So this is for buying, and for selling I have a bearish bias. आइए let's talk about put again. Let's say जब यहाँ पे आया, जब यहाँ निफ्टी आया, and I thought okay, it's at a very good support, it might go up. तो हमने कहा कि यहाँ पे हम कॉल को बाय कर लेंगे. बट वी कुड हैव सोल्ड अ पुट. लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर सेल करते, द प्राइस वाज समवेयर अराउंड 338 एंड इट वेंट डाउन टू 150. डिड वी मेक अ प्रॉफिट? सेल 338, बाय 150. सेल मोर, बाय लेस. वी कुड हैव मेड अ प्रॉफिट हियर आल्सो. ठीक है? सो दिस मींस दिस इज आल्सो बुलिश if you sell it. Confusion तो नहीं है? Everyone clear so far? Can I go forward? ठीक है, lovely. Okay, आगे चलते हैं. Now let's talk about, so we have just missed one thing. ये strike price क्या है? बाकी तो clear हो गई. This is clear. But what is this? Let's talk about that. Okay. So different strikes होती हैं. मैं थोड़ा clean कर देता हूँ. Let me just clean this a little bit. 17,700 call,
17,800 कॉल, 17,900 कॉल, 18,000 कॉल। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सब कुछ सेम लगाया है, चारों चीजें सेम है, केवल नंबर जो स्ट्राइक प्राइस है बहुत डिफरेंट है, राइट। निफ्टी चारों निफ्टी है, सारी 9 फेब है, सारी सीई है, सारी कॉल है, बट ये बीच का जो स्ट्राइक है वो चारों का डिफरेंट है। ये चार अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये चारों अलग अलग कॉल ऑप्शन है, ठीक है। बट अब कंफ्यूजन होगा कि लेट्स से आई एम बुलिश, तो मैं इनमें से कौन सा लूं सर, क्वेश्चन तो ये आता है ना, ठीक है। मैं बुलिश हूं, मुझे ये भी पता है कि मुझे कॉल बाय करना है, बट आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, व्हिच वन टू बाय, तो वो डिस्कस करने वाले, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि इन स्ट्राइक प्राइस से क्या अफेक्ट होएगा, ठीक है। सो लेट्स राइट इट डाउन, 17,700, 17,800, 17,900, 18,000. Let's write down the premiums. Let's write down the premiums. Opening premium डाल देते हैं. Let's write down the opening premiums, the starting premiums. So first 5-minute candle का close 148, 148. $100.100 rupees. 62 and 37 and 37, ये हमने ओपनिंग प्रीमियम डाल दी, ठीक है। ओपनिंग प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शंस में जो प्राइस होता है, दिस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीमियम, दैट्स इट। नोट, जैसे अलग अलग वर्ड्स में बोला जाता है, ऑप्शंस के प्राइसेस, जो प्राइस जो चल रहा है उसको प्रीमियम बोला जाता है, दैट्स इट। और कोई कुछ देयर इज नो मीनिंग टू इट, ठीक है। एंड लेट्स से व्हाट एट व्हाट टाइम डिड इट क्लोज, क्लोजिंग प्रीमियम कितने प्राइस पे क्लोज हुआ, तो 195, 131, 81 एंड 46, ठीक है। मैंने सारे प्राइस डाल दिए। अब आप ये बताओ कि हमारा पीएनएल क्या आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सा बाय करते हैं। लेट्स सी व्हाट वुड हैव बीन आवर पीएनएल। सो बाइंग कर रहे हैं हम, ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप आज बुलिश होते, which one you would have preferred according to this, which one you would have preferred? कलिंगा, मुझे आईटीएम नहीं पता क्या होता, आई डोंट नो व्हाट आईटीएम इज। 17,700, ओके, 17,700, ज्यादा 17,700 बोल रहे हैं, ओके। Why? You can see that the profit is maximum here. The profit is maximum here, right? Can you see here? The profit is maximum. So as we can see, let's write down the spot price. Spot price होता है, निफ्टी का प्राइस क्या था? Let's talk about the Nifty also. Nifty spot price was 17703 and it closed at 17854. इसका भी पीएनएल देख लेते हैं। 151, ठीक है। That means Nifty went up by 151 points. Nifty went up by 151 points, whereas your call went, this call went up by 47 points, this went by 31, 19, और ये तो 9 रुपए प्रॉफिट दिया। इतना मूवमेंट के बाद भी इसने केवल 9 रुपए का प्रॉफिट दिया। दिस इज क्लियर, यहां तक अभी सब कुछ क्लियर होगा, कैलकुलेशंस क्या करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएनएल परसेंटेज। पीएनएल परसेंटेज की बात करते हैं कि जो प्रॉफिट आया वो परसेंटेज टर्म्स में कितना आया। दिस वाज द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 148। Okay. So can you see this? That your percentage, this is the profit percentage जो movement आई. Okay. Now let us see what does this 195? What does this 195 mean? What does this 190, or let's say what does this 148 mean? ठीक है, जब ये 148 का था, और before that let me tell you, कॉल में प्रॉफिट कब आता है? When do you make profit in call? On expiry
on expiry मतलब on 9th Feb if the spot price is above your strike price, then you make profit. मैंने क्या बोला? If the spot price, if this price जो निफ्टी का प्राइस है, if that is above the strike price, that's when you make not the profit, that's when you make the revenue. That's when you make the revenue. ठीक है? इसका मतलब हुआ, let's say if I buy 18,000 call, let's say if I buy 18,000 call because I feel the market is going to go up, मुझे यहां से लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, I can buy 18,000 call at let's say 46 rupees. ठीक है? मैं क्यों बाय करने जा रहा हूँ 46 because it's the cheapest. अगर आप देखो यहाँ this is the cheapest, right? It's only 46 rupees. Whereas if I want to buy 17,700, it's 195 rupees, right? तो यहां पर मैं अगर देखूं cheapest is 46, so let's say I want to buy a call 18,000 call at 46 and it goes up also. My analysis was right. Nifty actually went to by 100 points, went to 17,950. It actually went up by 9th February. What will be the price of 18,000 call on that day? So I was bullish. What did we say here? I was bullish. ठीक है, इसलिए मैंने निफ्टी की कॉल खरीद ली 18,000 कॉल, मैंने 46 खरीद ली, सबसे सस्ती कॉल मैंने खरीद ली. निफ्टी वेंट अप आल्सो फ्रॉम 17,850 इट वेंट टू 17,950. सो माय एनालिसिस वाज राइट कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बट व्हाट इज द प्रॉफिट हियर और व्हाट इज द लॉस हियर? उस दिन वैल्यू क्या होगी इसकी? उस दिन वैल्यू क्या होगी इसकी? द वैल्यू विल बी जीरो. द वैल्यू विल बी जीरो. ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है कि जीरो क्यों होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्लियर नहीं? फिर से बात करेंगे. अगेन लेट मी टॉक अबाउट इट अगेन. हमने कहा ऑन एक्सपायरी on 9th Feb, you will make money, or the value of call will have some money left. Basically, read this. On expiry, if the spot price, this is the spot price is Nifty ka price. Okay? If the spot price is above your strike price, this is your strike price, only then you will make some revenue. Profit की तो बात भी नहीं कह रहे. Revenue मतलब आप कितने पे सेल कर पाओगे. ओके, वी सेड कि अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है, इफ इट गोज अप बाय 100 पॉइंट्स, इज 17,950 मोर देन 18,000? Is 17,950 more than 18,000? No. That means on this day, the value, the final value. So if Nifty closes at 17,950, the final value, selling price, will be zero here. What will be the value here? What will be the value here? What will be the value here? 50. What will be the value here? 150. And what will be the value here? 250. ठीक है? ठीक है? So, how much P&L did I make? 250 पे सेल किया, 195 पे बाय करा. This is the profit which I made or losses which I made. क्लियर हो गया? इतना क्लियर होते आ रहा है? अगर हम अगेन P&L परसेंटेज की बात करें, ये मेरे प्रॉफिट के परसेंटेज आ गए. ये मेरे प्रॉफिट के परसेंटेज आ गए. I ended up having a profit of 28% in 17,700 call. I ended up having a loss. नहीं, अभी मैं इस दिन से बात कर रहा हूं. अभी मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ये वाला आज का एग्जांपल ले रहे हैं, टुडे. ठीक है सर, प्लीज यूज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट अर्न्ड फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंस. I've used formulas everywhere. I've used formulas. यहाँ ऊपर फॉर्मूला ही है. Everywhere I've used formulas only.
अच्छा ये वाला आप कह रहे हो, ओके ओके, 17,950 माइनस दिस, बट इट विल नॉट बी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब तो आपको लगा यार पर 18,000 तो फिर लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ तो लॉस हो रहा है, यहाँ तो लॉस हो रहा है, राइट। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट मी मेक इट लिटिल स्मॉलर। दिख रहा है ना, इज इट विजिबल, इज इट स्टिल विजिबल, इज इट स्टिल विजिबल, ठीक है। नाउ लेट्स से इफ निफ्टी, हमने सोचा तो था कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, we felt the market is going to go down, go up, but our analysis was wrong, it actually fell. So let's say if nifty closes at 17,700, आज 17,850 है, instead of going plus 100 it went minus 150, नीचे गिर गया, हमारी एनालिसिस गलत हो गई, ठीक, एनालिसिस गलत हो सकती है। देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, 17,700 कितने का होगा, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, 0 0 0 0, करेक्ट, सेम थिंग यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट विल बी माय पीएनएल, व्हाट विल बी माय पीएनएल, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। Oh no, I am making a loss of 195 points here compared to only 46 points loss, only 46 points loss. So now the things are upside down. आप देख सकते हो कि जहां पर मुझे, जब तक तो हमें लग रहा था कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, वी वर हैप्पी टू गो विद 17,700 कॉल, बट जैसे ही हमारी एनालिसिस खराब हो गई, we actually don't want to go with this, we want to go with at least 18,000 call. यहां तक क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हुआ, and that is the reason why we have different these call options is this, that obviously we don't know what the market is going to do, right? So now you can understand that there is no inherent edge, I would say, by buying 17,700 18,000, because as per our analysis one can be better or the other. यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा मैक्स लॉस क्या है, व्हाट इज आवर मैक्स लॉस। मैक्स लॉस एज यू कैन सी इज द बाइंग प्राइस, क्योंकि जितने पे मैंने बाय किया था वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। इफ आई बॉट समथिंग फॉर 100 रुपीज, क्या लॉस होगा, 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। सो माय मैक्स लॉस इज दिस, दिस इज माय मैक्स लॉस, क्लियर हो गया। यू कैन सी जितनी भी आप महंगी लोगे मैक्स लॉस आपका ज्यादा होगा, दिस इज योर मैक्स लॉस, ठीक है। बट फिर आप सोचोगे यार फिर हम ये ले ही क्यों रहे हैं, राइट, बट ये इतनी महंगी क्यों है, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन व्हाई इज दिस सो एक्सपेंसिव व्हेन दिस वी कैन गेट इट फॉर 46, व्हाई इज दिस एक्सपेंसिव, उसका भी रीजन बात करते हैं कि व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू and extrinsic value. This is also called time value. Okay, intrinsic value का मतलब होता है कि अगर 17,854 है अभी, right, when today when market closed it is at 17,854, let's say on 9th Feb the market is still at 17,854, the market is still at 17,854, मतलब market move ही नहीं किया, वहीं रहा। Then what will be the revenue, what will be my selling price, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 154, right, 17,854 minus 17,700, 154, 54 0 0, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कैलकुलेशन क्या करी, क्लियर है, आगे चलें। This is called the intrinsic value. This is called the, please repeat. मैंने कहा current value, this is our, हम इसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। 17,854 is today's Nifty, the current Nifty 17,854. I am saying assume on 9th Feb, expiry by then, on the day of the expiry, the value of Nifty is still the same. ऊपर नीचे करा, but it ended up at 17,854. Okay.
उस दिन हमारी क्या सेलिंग प्राइस होगा, जैसे हमने कैलकुलेशन अभी करी थी, 17,854 minus 17,700, that is our revenue, that is 154 rupees. ठीक है, similarly 17,854 minus 17,800, which is 54 rupees, but 17,854 is less than 17,900, so this is 0, 0. ठीक है, this is called the intrinsic value. This is called the intrinsic value. Intrinsic value का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो कि ये this is 195 rupees, बट उसका रीजन है, द रीजन इज कि इसमें 154 तो ऑलरेडी है, मतलब चांसेस आर दैट इवन इफ द निफ्टी डज नॉट मूव, even if nifty does not move, you will still get 154 rupees back out of this 195. तो लॉस कितना होगा इसमें, एक्चुअल लॉस if nifty doesn't move, our loss will be 195 minus 154, 41 rupees only. क्लियर हो गया, this loss जो हो सकता है if nifty doesn't move is called the extrinsic value or the time value. Everyone clear so far? Everyone clear so far? Everyone clear? आगे चलें, ठीक है, lovely. टाइम वैल्यू रिपीट, टाइम वैल्यू मैंने कहा करंट वैल्यू इज 195, करंट वैल्यू इज 195, उसमें से 154 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू मिले, दिस ऑप्शन इज एक्चुअली वर्थ 154 रुपीज, बिकॉज अगर निफ्टी डजंट मूव फॉर नेक्स्ट 1 वीक, it remains at 17,854, we are anyway able to sell it for 154 rupees, selling price ये रहेगा, but it is currently trading at 195, so out of this 195, 154 is called intrinsic value, which is already inbuilt in this premium, in this option. The remaining, so 195 minus 154, 41 rupees is your extrinsic value, which is also called time value. Okay, this is the max, this is the actual loss that is happening if nifty doesn't move for the 1 week. ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. अब हमें यहां पर आपको देखना है, इंट्रिंसिक वैल्यू सेट इज समथिंग विच वी जनरली अज्यूम कि ठीक है ये तो हमारे पास है ही, दिस इज समथिंग दैट वी कैन गेट बैक. ओके, एक्सट्रिंसिक वैल्यू और द टाइम वैल्यू इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी आर बाइंग ऑप्शंस, व्हेन वी आर बाइंग ऑप्शंस, इन दैट केस योर टाइम वैल्यू, आपने सुना होगा टाइम वैल्यू डिके होती है, टाइम वैल्यू डिके होती है. As you can see what is happening. इस केस में, as I said, if we have 4 days left, right? We have 4 days left. तो एक दिन में, if every day Nifty remains at 17,854, every day if Nifty remains at 17,854, it does not move, you will still notice that the premium of 17,700 call will keep going down. But कितना down आएगा? वो almost आप मान सकते हो कि 40 का 1/4 मान लो आप. For there is no, there obviously there's a science behind it, but let's keep it easy. For every day, assume 1/4 कम आएगा. So this 195 will become 185 because it has gone down by 10 rupees, which is 1/4 of this. Whereas these are going down by much more. These are going down by much more. Right? This will go down by almost 20 rupees. So this will become 111. This will become 61. And this will again go by, let's say 15 rupees or 11 rupees. This will become 35 rupees. ये नेक्स्ट डे का है, मंडे का है एग्जाम. ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्सट्रिंसिक वैल्यू मींस. तभी आपको काफी बार लगता होगा कि आज मैंने कॉल को बाय किया, मार्केट डिडंट मूव एट ऑल, इट वाज साइडवेज, बट मेरी कॉल में लॉस आ गया. हुआ है किसी के साथ ये? लेट्स से यू बॉट अ कॉल एंड मार्केट डिडंट मूव मतलब गॉन अप, गॉन डाउन एंड फाइनली रिमेन्ड एट द सेम प्राइस, बट देन बाय 3:30 यू आर रियलाइजिंग यार प्रॉफिट तो आया नहीं, लॉस हो गया. राइट, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच इज द करेक्ट प्रीमियम टू बाय. अभी तक हमने ये तो बात करी ही नहीं. विच स्ट्राइक शुड बी बाय, विच स्ट्राइक शुड बी बाय, लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स से इफ निफ्टी क्लोजेस एट 18,200, सेम एग्जाम्पल, आज हमें लग रहा है निफ्टी ऊपर जाने वाला है. टुडे वी फील द निफ्टी इज गोइंग टू गो अप वेरी इजी.
और हमने बाय कर ली कॉल, हमने कॉल बाय कर ली, एंड ऑन 9th Feb it is at 18,200. We have made a killing. So let us see what are the prices. इसकी कितनी होगी सेलिंग प्राइस? 500, 500 करेक्ट. 18,200 minus 17,700, 500. इसकी 400, इसकी 300, इसकी 200. ठीक है. What will be my P&L? 500 minus 195. ये P&L हो गया, ये P&L हो गया. बट इफ यू टॉक अबाउट P&L परसेंटेज, कितना परसेंट का रिटर्न आया? दिस इज द रिटर्न दैट वी गॉट इन 1 week. यहां तक कैलकुलेशन सबको क्लियर है? इज द कैलकुलेशन क्लियर सो फार? So Nifty went up. We felt Nifty is going to go up. We bought calls, and these are the kind of returns that we could have got if buying. जो हमने 4 अलग अलग बाइंग करते हैं. यहां तक क्लियर है सबको परसेंटेज में? एनी क्वेश्चन सो फार? अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? कैन यू सी समथिंग इन दिस? कैन यू सी द लास्ट एग्जांपल? Isn't 18,000 call giving you the most reward? Is 18,000 call giving you the most reward? क्या 18,000 कॉल सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है परसेंटेज वाइज में? अगर आप 46 रुपीज लगा रहे हो, अगर आप 46 रुपीज लगा रहे हो, वो आपको 154 दे रहा है. वो आपके पैसे 3 टाइम्स कर रहा है, 300%. Correct? And we know one thing, that when there is, do we need to subtract TV from P&L? No, nothing. We don't have to subtract anything. Why will we subtract anything? ये तो on that day, on expiry, there is no TV left. No? There is no TV left anyway. On expiry, there is no TV left. We also know that if you are going for the biggest reward, this must be most risky also. This must be most risky also. Correct? We can clearly see that 18,000 is giving us the most reward. हमने numbers proof कर रहे हैं कि हाँ ये आपको सबसे ज्यादा reward देगा. So corollary, this has to be the most risky also. And that is why it is said. पहले आपको जल्दी से OTM, ITM, ATM का concept बता देता हूँ क्या है. Current price is 17,850, right? 17,850. So the option which is closest to 17,850. Okay, obviously हमने यहाँ add नहीं किया. That would be 17,850 call. 17,850 call. This is the closest, right? It is 17,850 call is the closest to 17,854. So that is called ATM. That is called ATM, at the money. It is exactly at the money, means it is exactly at spot price. Okay, so 17,850 will be your ATM. In calls, if the strike price is above the spot price, these are called OTMs, out of the money. And the strike prices which are below these, the spot price, are called ITM, which is in the money. ठीक है? So it is said कि आप जितना OTM जाओगे, उतना रिस्क बढ़ेगा. We can clearly see here. We can clearly see. So OTMs are risky. Clear हो गया? Again, numbers बता रहे हैं. You can see here percentage wise. Both the OTMs gave much more percentage returns compared to ITM. And why is it risky? ये देखो, जब loss हुआ, it gave you bigger loss. It gave you bigger loss, 100% loss compared to ITM. ठीक है? So that is why these are most risky. OTMs are most risky, but most rewarding also. अब next question आता है, how many of you actually like to buy? These are also called penny options. Penny options, सस्ते options. As you can see, they are very cheap, right? How many of you actually like to buy options, cheap options? How many actually like to buy cheap options? Buy call या buy put, सस्ते वाले. How many of you actually buy that? करते हो, right? Few people are doing.
बट देन यू रियलाइज कि वो लॉसेस में जनरली क्यों कन्वर्ट हो जाता है. कैन यू रियलाइज दैट नाउ कि वाई दे कम पैसे लगते तो ठीक है सर सौरभ. आर एम इज क्या? इज आर एम टू डू ट्रेडिंग और टू मेक मनी? पहले तो एम होना क्लियर होना चाहिए ना. अगर तुम्हारा एम ट्रेडिंग करने का है तब तो यस वी शुड बाय ओटीएम ऑप्शंस बिकॉज सस्ता है, खरीद लो. बट द एम इज एक्चुअली नॉट टू मेक मनी, नॉट टू ट्रेड. आवर एम इज टू मेक मनी. करेक्ट. तो इसलिए डू नॉट बाय एन ऑप्शन बिकॉज वो सस्ती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डू नॉट बाय एन ऑप्शन बिकॉज वो सस्ती है, बिकॉज कम पैसे लगते हैं, बिकॉज आवर एम इज नॉट टू ट्रेड, आवर एम इज टू मेक मनी. यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप सस्ते ऑप्शन खरीदोगे, चांसेस आर, सिंस दे आर द मोस्ट रिस्की वंस, दैट उसमें लॉस हो जाएगा. चांसेस आर कि उसमें लॉस हो जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एवरीवन इज क्लियर? एवरीवन इज क्लियर अबाउट? सो ग्रेट, लेट्स गो फॉरवर्ड. अभी तक हाउ इज द क्लास गोइंग? हाउ इज द क्लास गोइंग? गुड, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है ना? जिन जिन को क्लियर नहीं हो रहा है प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग. देखिए रिकॉर्डिंग्स इसलिए ही हैं, रिकॉर्डिंग्स इसलिए ही हैं. प्लीज गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. अब मैं अभी तक मैं बाइंग का हेलो. I want to launch a poll. Can I launch? Yeah, please go ahead. Sir, it's for like rating our class, our today's session, sir. Okay. Okay, sir. Please, everyone attend the poll. Still 40% left. Please do hurry. Can we please at last request? Ajit, what do you want to request? I didn't understand. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Abhi, give me 5 minutes, then we'll ask everyone to unmute. Okay. I just want to quickly end today's session and then we'll unmute. ठीक है, बंद कर रहा हूं मैं. हाँ. Yes. So अभी तक हम लोग बाइंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, right? We were talking from the buying perspective. Can we buy more number of strikes? तब मैं all the questions ना, अभी मैं सबको unmute को ऑप्शन दे दूंगा, आप तब पूछ लेना. Let me just finish my today's part. This is from a buyer perspective, right? This is from a buyer perspective. From a seller perspective, remember हमने यहाँ पे selling का example भी देखा था, जो option sell कर रहा है. Does that mean that selling OTM options are least risky? Can you see this also? Opposite हो गया ना. If for a buyer, if these are most risky, for a seller these are least risky. Okay. अब last question आता है, then which one should I buy? Which one should I buy? That's the last question, right? That depends on your conviction. That depends on your conviction. अगर आपको ज्यादा conviction है, right, कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप रिस्की ले लो. आपको कम conviction है, go for this. Okay. It depends on your time frame. कितनी दिन तक आप होल्ड करने वाले हो. If you're going to hold it for a long time, then probably this is not a great idea, right? Because वो धीरे धीरे करके decay हो जाएगी. Then maybe you should go for an ITM if you want to hold it for a long time. And it depends obviously on your risk profile. कि आप कितनी risky trade ले सकते हो. तो कोई answers का yes या no answer नहीं. There is no yes or no answer. Obviously there is no yes or no answer because these exist because someone is trading these, right? All of these are getting traded.
but which one you should buy, you have to think from these angles. ठीक है? So this is all for today. Now let me ask you guys, जो भी आपके कोई question होंगे. So easiest would be you can just raise hands and I'll keep unmuting you, ताकि we can ask questions one by one. And as I said, I will be sending you this Excel on the group. मैं आपको सारे Excel में दे दूंगा. And where is the PPT? ठीक है. PPT में जो आपको बेसिक्स है ये मैंने आपको बता दिया है. अगेन आप ये पढ़ लीजिएगा. you'll know what's written. तो मैं ये पढ़ नहीं रहा, ये आप खुद ही पढ़ लेना. ठीक है, अब आप लोग बताएं. ओके, आई एम अनम्यूटिंग वन बाय वन. मिस्टर अजीत प्लीज. हेलो सर. यस सर, बताएं. तो मुझे ये पूछना था कि अगर इंट्राडे से 1 या 2 दिन का पर्सपेक्टिव है तो हम लोग को क्या लेना चाहिए. और आई हैव हर्ड दैट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ डेज लाइक फ्रॉम ट्यूसडे और टाइम वैल्यू डीके होता है. तो व्हेन इज द गुड डे टू बाय अ कॉल ऑप्शन. एंड ऐसा कुछ है क्या, एनीथिंग बैक टेस्टेड और एनीथिंग इट इज देयर कि आफ्टर ट्यूसडे यू डोंट या वेडनेसडे नहीं लेना चाहिए इफ वी आर बुलिश द पुट राइटिंग अच्छा है, ऐसा कुछ होता है या इट इज जस्ट अ मिथ? नहीं, आपने जो कहा कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप थर्सडे के आसपास आते जाएंगे, जो आपका ये टाइम वैल्यू है वो ज्यादा फास्टर डिके करेगा. ये लीनियरली डिके नहीं करता है. मतलब अगर 40 का हमारा टाइम वैल्यू है, सो ऐसा नहीं है कि मंडे को भी 10 पॉइंट गिरेंगे, ट्यूसडे को भी 10 पॉइंट गिरेंगे, ऐसा नहीं है. जितना आप थर्सडे के पास होगे उतना ज्यादा गिरेगा. हो सकता है थर्सडे को इनमें से 20 पॉइंट गिरे, थर्सडे को सीधे 20 गिरे, वेडनेसडे को 10 गिरे, ट्यूसडे को हो सकता है केवल 6 गिरे, और मंडे को 3 गिरे, और फ्राइडे को 1 ही गिरे. आप समझ लो क्या कह रहा हूं मैं. जितना आप एक्सपायरी के पास जाओगे आपकी डिके ज्यादा फास्टर होगा. ठीक है, अभी मैं डिके की बात करूं, ये हम एक्चुअली बात करेंगे जब हम ऑप्शन ग्रीक्स की बात करेंगे. बट दिस इज ओनली फ्रॉम अ डिके पर्सपेक्टिव. दिस इज ओनली फ्रॉम डिके पर्सपेक्टिव. बट दैट डजंट मीन कि ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि थीटा आपके अगेंस्ट आ गया. अभी क्या है, मैं अगेन आई विल डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीक्स. बट गामा आपके साथ हो गया. गामा इज विद यू एज अ बायर. सो इट डज नॉट मीन कि आप नहीं बाय कर सकते. नो, इट डज नॉट मीन दैट. ओके. और सर अगर इंट्राडे 1 या 2 डे के पर्सपेक्टिव से मैं करता हूँ तो आउट ऑफ द मनी ठीक रहता है या एटीएम ठीक रहता है सर? मैंने बताया ना, वो तो आपके रिस्क प्रोफाइल पे, कोई देयर इज नो आंसर टू दैट. अच्छा, वो तो अब आप मुझसे पूछो, मतलब देयर इज नो आंसर. वो तो आप कितनी रिस्क लेने जाते हो उस पर डिपेंड कर रहा है ना. हम कल डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग. मैं उसमें आपको थोड़ा और आइडिया दे पाऊँ. ओके ओके सर, थैंक यू. मिस्टर पात्रा प्लीज. उप्स उप्स उप्स, मिस्टर पात्रा आपका हैंड रेज कहाँ चला गया? हाँ जी, बताएं. Just one question. Maybe it is not related to today's topic, but I was just preparing my, strategy and all. So can we stop loss using our code? Can we trail our stop loss? Suppose for example, अभी वो बढ़ गया है price. No questions regarding coding today. No questions. Okay. So and one more question, sir. ये आपने जो मतलब शुरू में बताया कि ये guaranteed profit नहीं है. Can you guaranteed? No, this I mean जो भी आपने पहले स्लाइड में दिखाया ना कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिट बना. तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? मतलब रीजन क्या है? गारंटेड प्रॉफिट नहीं है मतलब हमारा कोडिंग अच्छा नहीं है, वी नीड टू इंप्रूव द कोडिंग, और इसमें स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा. वो थोड़ा मतलब डिटेल में बताएंगे? हाँ, there is no strategy which works 100%. No, 100% तो नहीं करेगा, but ultimately after a particular duration वो तो कुछ ना मतलब. किसने कहा आपको? कहाँ लिखा है? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ. नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ सर. नहीं सर, नहीं. कोई देयर इज नो गारंटी प्रॉफिट. अगर आपको कोई बता रहा है गारंटी प्रॉफिट, झूठ बोलते हैं. ओके, ठीक है. आप लोग, वी गेट ऑल दिस काइंड ऑफ व्हाट्सएप्स एंड एसएमएस, गारंटीड प्रॉफिट, 100% एक्यूरेसी. ये नहीं होता है सर. ओके, प्लीज डू नॉट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स. एल्गो ट्रेडिंग डज नॉट मीन कि प्रॉफिट होएगा. डज नॉट मीन दैट. तो उसका जो मेन मेन पॉइंट है उसको कितना मतलब एफिशिएंटली हम कोड कर सके, सो दैट एटलीस्ट चांसेस अच्छा रहेंगे, राइट? देखो, मैं अगेन बता रहा हूँ, कोडिंग से फर्क नहीं पड़ेगा.
कोडिंग तो आपका जो आइडिया उसको एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म है, ठीक है ना, कोडिंग से नहीं फर्क पड़ेगा, बट देयर इज नो स्ट्रैटेजी जो आपको 100% गारंटी दे दे। आज मैं आपको बोलूं कि आप ओटीएम 500 1000 पॉइंट का ओटीएम कॉल और पुट सेल करके बैठ जाओ, ठीक है ना, व्हाई आई एम सेइंग सेलिंग, बिकॉज हमने कहा कि सेलर का सबसे लीस्ट रिस्क क्या है कि ओटीएम सेल कर दो, आप 10 रुपए की कॉल 10 रुपए की पुट सेल कर दो, बट डज इट स्टिल गारंटी योर प्रॉफिट्स? नहीं, कल अगर ओपनिंग में ही लोअर सर्किट लग गया तो खत्म। ओके तो देयर इज नो गारंटी सर, देयर इज नो गारंटी, कोई भी आपको बोल रहा है गारंटी, ही इज लाइंग टू यू, सिंपल। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। एक मैं आई एम अनम्यूटिंग वन बाय वन, लोगों ने हैंड रेस किया ना, मैं एक एक करके ही अनम्यूट कर रहा हूं सबको। मिस्टर धर्मेश प्लीज, मिस्टर धर्मेश प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग। सर एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपने एक्सपायरी पे जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया डायनेमिकली, हम लोग ड्यूरिंग द डे, सपोज स्पॉट प्राइस एक्स है और वो फ्यूचर उसका वाई हो गया, आइदर इट्स लोअर्ड और इट्स हैज गॉन अप, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, प्रॉफिट और लॉस बोथ किसी आपको सिचुएशन? रिकॉर्ड नहीं, आपको लाइव तो आपको पता चल जाएगा ना प्राइस। नहीं, लाइव तो पता चल रहा है सर, एक फ्यूचर प्राइस होता है, मान लिया हम एंट्री ले रहे हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसा कि समझ गया, वो हम बात करेंगे ग्रीक के समय, उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है उसको सर, डेल्टा, we'll talk about that when we talk। राइट राइट सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन था सर। जी, मिस्टर सचिन प्लीज, मिस्टर सचिन। गुड इवनिंग सर। मुझे ये evening, पूछना है कि लाइक जब हम लोग सिंथेटिक फ्यूचर से स्टार्ट किया था कि लाइक फ्यूचर की जगह पे सिंथेटिक फ्यूचर बाय करना इज मोर सेंसिबल और उसमें अच्छा पैसा जी। बन सकता है, टैक्सेशन कम होता है। तो सिंथेटिक फ्यूचर के लिए हम लोग स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करते हैं? कोई भी कर सकते हो सर, कोई भी कर सकते हो, सिंपल तरीका है। अगेन आज मैं उतना इसको डिस्कस नहीं करूंगा, विल टॉक अबाउट इट लेटर। कोई भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से करंट प्राइस है 17800, ओके, निफ्टी का प्राइस। लेकिन आप ये क्या कर सकते 17800 हम जो बात कर रहे हैं ये फ्यूचर है या स्पॉट है? क्योंकि अगर मैं बैंक Spot. निफ्टी बोलूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर 200 से 250 पॉइंट का एक Spot. प्रीमियम रहता है। कुछ फर्क नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, स्पॉट अवेलेबल। हाँ, अच्छा स्पॉट है। हाँ लेट्स से रैंडम नंबर 17812। हाँ हाँ तो आप क्या कर सकते हो, आप 17800 एंड लेट्स से यू आर बाइंग अ कॉल, यू वांटेड टू बाय अ फ्यूचर, लेट्स से हाँ हाँ आप बुलिश, तो आप 17800 कॉल को बाय कर लेंगे और आप 17800 पी को सेल कर देंगे, ये भी सिंथेटिक फ्यूचर। आप 17900 कॉल को बाय कर लेंगे, आप 17900 पुट को सेल कर देंगे, ये भी सिंथेटिक फ्यूचर है। सर लेकिन जैसे हम लोग अभी जैसे 17800 की बात कर रहे हैं, जितना हम लोग लंबा जाएंगे 17900 पे, तो हाँ हमारा डेल्टा 1 ही रहेगा इसमें। लेकिन मैं इसमें कैसा होगा कि लाइक जो डीके रहेगा वो डीके मेरे को बहुत कम मिलेगा 7900 में, और जो 7900 है, तो इन केस ऑफ रिवर्सल ऐसा हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, रिवर्सल आएगा तो इसमें सबसे ज्यादा वो मार पड़ेगी। अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं आप, चलो लेट्स डू मेरा इट। ये बोलना है कि लाइक हाँ अभी लाइव कर लेते हैं। हाँ हमारा 17703 था, हाँ, ठीक है। ये हमने अगर हम स्पॉट यहाँ देखा है ना? फ्यूचर देख लेते हैं, चलो आप फ्यूचर देख अच्छा लो, क्योंकि आप फ्यूचर फ्यूचर देखना, पे बाय हाँ करते हैं, फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक सर। है। बैंक निफ्टी आप का एग्जांपल लेंगे तो और भी हेल्पफुल रहेगा। नो प्रॉब्लम, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी, हाँ ठीक है जी। आज हमने मान लिया बाय करते हैं क्योंकि प्रॉफिट दिखा देते हैं। हमने क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग पे बाय करा, विच इज 41365, ठीक है। लेट मी कीप राइटिंग। तो यहाँ पर हम पहले सिंथेटिक में पहले फ्यूचर का डाल रहे हैं। फ्यूचर का बाइंग प्राइस था हमारा 41635 था, 4136, एंड वी सोल्ड इट, लेट्स से क्लोजिंग को नहीं करेंगे क्योंकि क्लोजिंग चेंज हो जाती है, लेट्स से एक कैंडल पहले, ठीक है, ताकि आपको सही दिख जाए। वी सोल्ड इट एट 41630, 41630, okay. So my P&L here was this. Let's not talk about I buy 41400 की call and I'm selling 41400 की put. This I'm buying, them selling. 41400 की कॉल फर्स्ट कैंडल पे बाय करा 376 and it went till 451, 376 to 451, around 75 points.
let's do 41,400 put. It went from 558 to 355. 355. 558 है ना 550 550 to 355. 558 355. Sorry, not negative. Okay. This will be this minus this. Hmm. Sorry, this minus this सेल कर रहे हैं. Hmm. तो आपका नेट इसमें कितना आया? Okay. 278. Same. See, it's almost same. Hmm. It's almost same. Hmm. देख रहे हो ना आप? So strike will not matter. When you do it on a longer period, आज तो हम random एक example देख रहे हैं, but if you do it for the whole year, you will notice this is almost same. Okay. अभी इसके अंदर तो ऐसा था कि like okay, अगर व्यू रिवर्स भी होता तो भी फिर हम लोग उतने ही लॉस होता right? Sorry, मेरे आवाज नहीं आई, फिर से बताएं. अगर मेरा व्यू मतलब इसमें तो क्या हम लोग ने बुलिश व्यू दिया और हमारा व्यू सही लगा. अगर व्यू सिर्फ उल्टा हो जाता, या माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता. नहीं मेरा बोलना ऐसा है कि उस समय फिर मेरे को अगर मेरा पुट का स्ट्राइक जैसे 558 है तो मेरा पुट ज्यादा लॉस करता है कंपेयर टू कॉल. नहीं सर, सेम रहेगा क्योंकि इसकी मूवमेंट सिमिलर आएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा. अगेन आई एम गिविंग ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम. एक दिन का एग्जांपल देखोगे तो हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, ठीक है ना? बिकॉज ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि है ना मेरे पास कॉल के अंदर प्रीमियम कम है ये होने के लिए, और पुट के अंदर प्रीमियम ज्यादा है, पुट के अंदर लॉसेस अनलिमिटेड है. इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. आप सर ट्राई करो ना. मैं तो देखो आज आपके सामने रैंडम एग्जांपल उठाया. ओके अंडरस्टूड. ओके सर, नोटेड. ठीक है. ओके मिस्टर कुमार प्लीज. मिस्टर कुमार. हेलो. यस सर. सर एक छोटा सा डाउट है, ज्यादा बड़े वाले नहीं है. जनरली जो एक्सपायरी का दिन जनरली ये रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था, ज्यादा दिन नहीं हुआ था मेरे को ऑप्शंस करते हुए. जनरली 2 o'clock मतलब 2 o'clock या 1 o'clock याद नहीं है, बट 1:30 to 2 o'clock के बीच में ना ऑल ऑफ द सडन जो प्रीमियम है ऐसा ऑल ऑफ द सडन डाउन हो जाती है. ओके क्यों होती है पता नहीं क्यों. सर मुझे भी नहीं पता. अच्छा नहीं पता मुझे. ओके सर. ओके थैंक यू जी. मिस्टर मित्र प्लीज. मिस्टर किशोर प्लीज. Yeah. Hi. Could you? I don't know whether you would like to participate in this session. How do we look at volatility index, which in respect to option buying and selling? We'll talk about that when we talk about Greeks. Is that too premature to ask this question now? Yeah, I'll be talking about that in our next class, I think. Okay. Second question is the synthetic option we just talked about. In case of a option selling, future selling, we do just the opposite, right? Buy Correct. a call, put and Buy a put, sell a call. and sell a call. That's right. And Yes. this is the ATM call, right? Both of the ATM are. No, doesn't matter. Again, You said ATM. It can be anything, but it has to be similar. it has to be similar at the same strike price. Yes. Right. Okay. I have other questions which is not for this class. We take it Sure. later. Thank you. Mr. Patil, please. Mr. Patil. Mr. Patil. आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. I cannot hear you. Sorry. Mr. Praful. Mr. Praful. यस सर. Yes, sir. हेलो Yes, sir. सर, मेरा क्वेश्चन शॉर्ट सेलिंग को लेकर है. मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ निफ्टी 50 जी. एंड एवरेज में हम डेली अर्न कर लेते हैं. एवरेज मेरा ठीक है. जी. शॉर्ट सेलिंग को लेकर मैंने अभी तक ये चीज नहीं मैं आज भी नहीं समझ पाया और अभी तक नहीं समझ पाया. जैसे आज 17,650 पर निफ्टी थी, जी. 600 के पास. जी. मुझे लग रहा है मार्केट अप जाएगा, मैंने कॉल परचेज कर लिया. जी. अब जो सेल करना होता है, क्या मैं 17 जब से ये 200 पॉइंट ऊपर बढ़ गया तब सेल करेंगे? शॉर्ट सेलिंग कब करेंगे एग्जैक्टली? तो यही कर देंगे ना. अगर आपको ऊपर लग रहा है तो आप पुट सेल यही कर दो ना, नीचे की तरफ, जब यहाँ नीचे गिरा है. सर 17,600 पर आज जैसे निफ्टी थी, मुझे लग रहा है मार्केट अप जाएगा, तो मैं कॉल परचेज कर रहा हूँ. आपने यहाँ पर नीचे की तरफ कॉल परचेज करी. हाँ, कॉल परचेज किया.
आप उसके बदले आप यहाँ पे पुट सेल कर सकते थे इसी पॉइंट पे। अच्छा, अगर पुट में सेल यहाँ पर करता हूँ तो उसका मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट क्या आती है। बट अगर हम डिप अगेन उस वो सब रीजन हम कल बात करेंगे कि यहाँ मैं पे बेसिकली कॉल। जानना, सर एक सेकंड, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कॉल जो है निफ्टी का किस समय शॉर्ट करूंगा? कॉल शॉर्ट आप करेंगे जब आपको लग रहा है निफ्टी नीचे गिरने वाला है। अच्छा, नीचे गिरने वाला है तब? ओके, हाँ। ठीक है सर, यही सिर्फ एक क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सुभाशीष प्लीज। गुड इवनिंग सर। बताएं सर। हेलो, गुड इवनिंग यस सर, बताएं। सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। हेलो। यस सर, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो एटीएम, आईटीएम या ओटीएम है, तो ये मतलब एल्गो में जब मैं ट्रेड करूंगा तो ये ऑटोमेटिक एल्गो वो स्ट्राइक प्राइस लेगा या मुझे वो पुट करना पड़ेगा? नो क्वेश्चन अबाउट कोडिंग सर टुडे। नहीं, मैं मतलब जस्ट रिलेटेड टू मतलब आज का जो ये है उसी के सर्वे में ऑटोमेटिक वो लेगा या ये जानना चाहता हूँ। सर अगेन नो क्वेश्चन अबाउट कोडिंग। कोडिंग शुरू तो होने दीजिए, उस दिन पूछेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। मिस्टर भाटिया प्लीज। मिस्टर भाटिया। Yeah, Aseem, hi, great class. My question is, if we're using synthetic futures, our overall cost, including all taxes, etc., still it is lower than one futures contract when we sell a pair? Yes sir. Yes sir, I did hear from. Oh, okay. Fine. Thank you. Yep, thank you. Okay, Mr. Govindu, please. Mr. Govindu, please. Mr. Govindu, if you're there. Hello, yes. Yes, Sir, sir. good evening, sir. Sir, Yes, who sir. will create all the strike prices? So what is the logic behind it? Who will create meaning? So for example, spot price is Nifty is 17,600. So the spot is, but the strikes above and below, the prices, how the prices will be determined, like so? Based on supply and demand. What's that? Based on supply and demand. All the prices in stock market is based on supply and demand, right? Mm-hmm. So as I said, yeah. Assume just like any stock. How do the price move? Because of supply and demand, same thing. Mm-hmm. Okay. And one more question, sir. So the future, right? So when market even doesn't move, the future price will not Correct. It will not go less, or but future, but option will ultimately becomes zero when expiry near zero, right? But future is advantage, right? In that case, why instead of buying call I could have sold, right? Then option becomes advantageous. Mm-hmm. It's the other way around, no? Why are you thinking from a buyer perspective? I'm thinking from a seller perspective. In future, you didn't make money in selling options. I still made money. Oh. Okay, thank you. Mr. Gaurav, please. सर ये मेरे को मतलब फ्यूचर मुझे पता है, सिंथेटिक का क्या मतलब है? आप बार बार बोल रहे हो सिंथेटिक फ्यूचर, सिंथेटिक का क्या मतलब है? आप ये एग्जांपल बताया ना, अभी मैंने करके दिखाया था। नहीं सर, एक बार थोड़ा बता दो कि मतलब फ्यूचर पता है मुझे, ऑप्शन पता है, सिंथेटिक समझ में नहीं आया। सिंथेटिक क्या मतलब नोट कर रहे हैं यहाँ पे? बाइंग ऑप्शन एंड सेलिंग ऑप्शन दोनों साथ में करते हैं, दो चीज करते हैं साथ में। अच्छा, उसको सिंथेटिक बोलते हैं। करेक्ट। अच्छा ठीक है। और बस सर, जो ये जो आपने सारा कैलकुलेशन लिया है, ये हमारा मतलब ये अपने एग्जाम्पल दिया, ये एक्चुअल में ऐसे ही होता है जब हम करते हैं? नहीं, मैंने तो लाइव डेटा दिया आपको, ये सारे तो लाइव एग्जांपल्स हैं। कोई इसमें कोई अपने मन से नहीं मैंने डेटा बनाया, ये सारे डेटा लाइव है। क्योंकि सर जैसे आपने ये स्ट्राइक लिया 17,700 और मेरे प्लेट सपोज 17,700 का स्ट्राइक है, मेरी कॉल जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो मेरी 148 रुपए दिखा रहे हो आप। और जब आपने इसमें निफ्टी क्लोजिंग 17,950 तो स्ट्राइक दिखाया 950, तो क्या 250 मूवमेंट के स्ट्राइक प्राइस पे मेरा जो कॉल का प्रीमियम है वो मेरा 250 पॉइंट मूव करेगा? करेक्ट, वो 250 रुपए हो जाएगा ऑन एक्सपायरी। ये 9 फरवरी की बात बता रहा हूँ मैं।
हाँ 250 अच्छा अगर स्पॉट का डिफरेंस 250 तो वो प्रीमियम भी मेरा 250 रुपए ही हो जाएगा, मतलब जितना डिफरेंस है। ऑन एक्सपायरी, यस। यस ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक। और सिंथेटिक आपने बता दिया, दोनों को एक साथ करना सिंथेटिक बोलते हैं। जी, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। मिस्टर राहुल प्लीज, मिस्टर राहुल प्लीज, मिस्टर राहुल। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, बताएं। Great class, sir. Thank you. Sir, my question is a bit general. We keep hearing that option Greeks options are made for writers, considering the Greeks and how they work. I want to know your opinion that whether option buyer could make profits as writers do consistently. Yes, they can, but they should know when to, what kind of strategy they should trade options. We'll talk about that, I think, day after. Talk about very specific instances where you should do option buying. Right, sir. Yes. Okay. Thank you. Mr. Rutvik, please. Mr. Rutvik. Mr. Rutvik, Hello, sir. Oh, sorry, Miss Rutvik. I'm sorry. Yeah. Yeah. Hello, sir. I'm completely new to options trading, and I just wanted to ask you. So when you were, excuse me. So when you were, if you go to the pivot, am I audible? Yeah. Where? If you go to the Nifty 50, the pivot chart that you were actually, yeah. So how do you read this? I'm new to options and I'm new to trading everything. So I just wanted to know how you're reading this map. If you can just explain, if not now, any other small session or. Actually, I will not be talking about the basics of stock market. Okay. So probably you can go through Varsity, Zerodha Varsity, because that will tell you what does this candle mean, what does the high price mean, what does the low price mean. So what I'll do is I'll share the link of one URL on the group on the WhatsApp. You can probably go through that. Thank you so much, sir. Thank you. I'll do that. Thank you. Mr. Chakravarti, please. Yes, sir. Good evening. जी सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने शॉर्ट सेल का बोला था, जैसे इंटरडे में हम लोग शॉर्ट सेल करता है, उसी दिन सेल करके 315 तक बाईबैक कर लेता हूँ, तो इधर ऑप्शन में उसको मतलब अगर मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में करता हूँ तो 1 वीक का अगर एक्सपायरी लेके चलता हूँ तो उसमें कैसे शॉर्ट सेल करेगा? सेम जैसे आप अभी करते हो, सुबह एग्जांपल लिया था ना मैं पुट का, आप पुट को यहाँ पे सेल करो, जब निफ्टी आता है यहाँ बाय कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, मैं अगर सी बाय किया, अच्छा सी ओके, सी सेल करेगा तो भी उधर जाके नीचे गिरेगा तो बाय कर लेगा। करेक्ट, मींस एक्सपायरी विद इन एक्सपायरी मींस सेम डे में नहीं। ओके ओके, राइट, गॉट इट, थैंक यू। राइजन जी, राइजन। Yes, sir. I'm S. Kumar. So I couldn't change the name. So it's taking a name from the computer. Sir, thank you very much for the opportunity. The class was wonderful. Sir, actually, I want to know if I want to create a synthetic on the expiry day or day before expiry. So do I need do I need to consider the same today's expiry, like yesterday there was expiry, so I consider same expiry, or I take the monthly expiry or weekly expiry for synthetic? Anything, it doesn't matter. It will work out to be even I could, okay, but the capital remains the same, or there is a difference in capital because the premium will be different, right? Capital almost same. Capital requirement of future versus these two is again similar. The margin requirement that you will require for, say, buying a future will be similar to doing these two. Okay, and okay, so it doesn't matter whether creating synthetic in today's expiry or next month's expiry, right? But generally people trade it in current expiry because you'll get more liquidity. Monthly expiry, not many people trade. Okay, so I can trade in. Okay, I got your point. You're saying in the weekly expiry, right? Weekly, yes. Thank you so much.
Thank you. Mr. Chauhan, please. Mr. Chauhan. Hello, sir. Am I audible? Yes, sir. Sir, sorry, the question is not regarding the class, but I just want to curious, sir. जैसे हम जब Python upload करेंगे laptops में, तो is it necessary कि वो Windows 10 ही होना चाहिए because I'm using an old laptop which is Windows 8? I think Windows 8 पे भी चल जाएगा. I think so. अगर टाइम है तो सर अपग्रेड करवा के Windows 10 कर दो. आप अभी मत करो. आप अभी मत करो. Come for that session. अगर उस दिन नहीं हो पाया, then we'll ask you. अभी मत करिए. Okay, fine, sir. Thank you, sir. Thank you. Mr. Bhanu, please. Mr. Bhanu. Mr. Bhanu, please. Hi, sir. Sir, my question is regarding synthetic future. Yes, sir, I never placed any selling a option, which requires a lot of margin, right? So I was a option buyer every time. So for placing the synthetic future, like how to make this margin lesser? Like, Cannot make them. if I sell 41400 PK, the margin will be like around something 1.5 lakhs or 2 lakhs. So how to make this like? If you just want to reduce the margin, buy OTM puts. Okay. No, like is there any order to reduce the margin? Like should I always buy the first. PC? Always buy first, then sell. Okay. Yeah. Okay. Yeah, one more question, sir. Whenever the market is bullish, we basically buy CE or for the buyers. For like which one is advantage, sir? Like selling a PE is better or buying a selling a PE is better or buying a CE when We'll talk the about market that. is. We'll talk about that tomorrow. Buying versus selling. Okay. Thank you, sir. Thank you. Mr. Gagan, please. हेलो गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, बताएं. सर मेरे को ये पूछना था सर, सिंथेटिक फ्यूचर और मतलब फ्यूचर में क्या मतलब ऐसा क्या मेन डिफरेंस है, क्या इम्पोर्टेंस? क्वेश्चन ही समझ में मतलब क्वेश्चन. सर हम डायरेक्टली फ्यूचर ही क्यों नहीं बाय कर रहे कि मतलब सिंथेटिक फ्यूचर क्यों बनाना पड़ रहा है? ये मैंने यहाँ रीजन दिया हुआ था. प्लीज रिपीट कर दीजिए सर. नहीं सर, आप वीडियो देखिएगा प्लीज. ओके सर, थैंक यू. साथियाम जी. Hello, good evening. Good evening. Can you just scroll down? Yes, sir. Yeah. Okay. ये जो सेल्स रो नंबर 63 सेल जी का जो बताइए. है, is it a typo? I will be buying at a higher price and I will be selling at a low, right? ये डेटा इंटरचेंज हुआ है. Oh yeah, numbers. You're right. Okay. Okay. That was one point. And आपने बताया कि बाई करें या सी लें या पी बाई और सेल करना है, उसके पहले वी नीड टू नो द मार्केट ट्रेंड टू डिसाइड अप है तो बाई करेंगे, लो, राइट? ये हाउ डू वी मींस फाइंड आउट वेदर मार्केट अप ट्रेंड जाएगा या एनी? You can't. I'm saying if you I mean this is what traders do, right? ये मैं आपको भी डिस्क्रिप्शनली बता रहा हूं. अभी I'm not talking about anything about algo. So what I'm saying is कि अगर आप anyway you are going to buy a future, rather than doing that you can do this. That's what I mean. But yes, you're right. Just by looking at the market I can't tell you whether it's going to go up or go down. I mean there is अच्छा ठीक. Cool, that answered. Thank you. Thank you. Mr. Satish, please. Mr. Satish. Okay, maybe he's not there. Mr. Praveen. Hello, sir. Yes, sir. I think I got involved in some other discussions or meetings, so I might have missed some portions of the sessions. So, ये recording कब available होंगी, sir? I mean, by what time? I just want to go through it as soon as possible and be ready for the next one. Again, I am not the right person because Rishabh जो हैं वो ही बताएंगे. देखिए, all the administrative tasks, right? I will not, because I don't get the recording. Recording उनके server पे जाती है, so I wouldn't know. I think they generally take about 12 hours on an average.
ठीक है ना? Okay. I think that's the gen because it's a longer recording, तो शायद इसको HD बनने में time लगता है. I think that's the Okay. time. No worries, sir. We'll wait for. But I will Right. send all my all the PPT and Excel right now on the group as soon as the class ends. तो मेरी तरफ से आपको मिल Sure, जाएगा sir. document. But Would really appreciate it. Video I don't have any I cannot tell you. कोई problem नहीं है, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, Mr. Joshi. Mr. Joshi. हेलो सर. Yes, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो अभी डिस्क्रिप्शनरी सब आपने बताया बट हम एल्गो में रूल बेस्ड जाने वाले हैं. तो सर मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं जिसमें हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं और जिसमें अगर रूल हमारे पहले से आइडेंटिफाई है कि इस तरह से ऐसा ऐसा करना है. तो सर जैसे कि पिछले जो वेबिनार हुआ उसमें आपने बताया था कि आप बैक टेस्ट कर सकते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को पास्ट डेटा लेके, राइट सर? Yes. तो सर अगर मैं जैसे कि मैं अगर एग्जांपल पकड़ते हैं, अगर मैं स्ट्रैडल पकड़ता हूँ और मुझे देखना है कि पिछले 3 सालों में उसने पास्ट डेटा लेके देख सकते हैं क्या सर एल्गो में वैसे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से बताएं, समझ में नहीं आया मुझे एक्चुअली आपका क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट सर. मैं हेलो. हाँ बताएं. अभी आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ, मेरा एक बताएं. क्वेश्चन जैसा है कि जैसे कि हम एक स्ट्रैटेजी लेके बैक टेस्ट कर सकते हैं कि पिछले पास्ट डेटा में किस तरह का हमें रिटर्न्स मिला या जो भी रिजल्ट मिला सर, राइट? करेक्ट. तो सर जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता है, अगर मैं स्ट्रैडल डालता हूँ सर, ठीक है. तो और मैं उसके रूल्स पहले से आइडेंटिफाई करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाता है तो मुझे ये एडजस्टमेंट उसमें करनी है, राइट? ठीक है. तो सर मैं उसको एल्गो में चेक कर सकता हूँ क्या सर कि इसका रिजल्ट रूल बेस से पिछले पास्ट में 3 साल से कैसा आया, तो मैं देख सकता Yes, हूँ. you can do. Yes, you can do. चाहे बड़ी स्ट्रैटेजी हो तभी भी कर सकते हो सर इसको हम? हाँ, रूल बेस्ड आप कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो. तो वो भी हम सीखेंगे सर? नहीं सर, बैक टेस्टिंग नहीं सीखेंगे. बैक टेस्टिंग नहीं सीखेंगे? नहीं. तो सर नॉर्मल स्ट्रैटेजी सर उसकी तो बैक टेस्टिंग सीखने वाले हैं क्या सर? नहीं सर, बैक टेस्टिंग नहीं सीखेंगे. ओके, थैंक यू सर. Thank you. Mr. Vinayak, 1 minute. I'll find you here. हाँ जी, बताएं. Hello. Yes, sir. Yeah, I just want to ask, like when we do synthetic future option trading, how much stop loss we need to keep, or we should take our own risk and go ahead with that one? That is your risk, na? Okay. I And for mean, that, like a time frame, like for a future 1 week option, like there is for a 1 there is week. no time. Again, that depends on you, sir. There is discretionary. Everything depends on you. What is your view? What is your stop loss? That's everything depends on you. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Anyone else? I've taken all the questions. I don't see. Okay, there is one more question. Sorry. Anyone else? Anyone else who I've missed? Okay, great. So if there is no one else, thank you again. Thank you again, everyone. Mr. Singh, no, you cannot use iPad, sir. You cannot use iPad. It has to be a computer. It has to be a computer. Okay, 2 more questions. Let's take last 2 questions. Let's take last. Sir, good evening, sir. Kumar Sami from here, sir. Sir, what are you from your opinion? What is the this stop loss means it is depends on the discrete opinion, like what is the risk they take. But in your opinion, what is the best stop loss we can in the option selling, not in the buying? I generally like 20%. I generally keep 20% of the option price. Ideal. 20% of the option price, yes. What is the profit actually? What is the ideal profit for selling? Should take? That depends on you. That depends on you. Okay, thank you very much. Thank you. I am more always worried about the losses, not about the profits. Actually, I use only 40-20 right now. I'm using it manually. So that's what I asked your opinions. You are experienced now. That's why I asked. Yeah, should be fine. That should be fine. Thank you, sir. Thank you. Okay, Mr. Saurabh. Mr. Saurabh, please. Hello.
Yes sir. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरा व्यू बुलिश है तो सी खरीदें, सी बाई करें या पी सेल करें, दोनों में प्रॉफिट होता है। तो ऐसा दो कॉन्सेप्ट क्यों है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कल यूज डिस्कस करते? करेंगे वो सर कि कॉल, क्योंकि कॉल बाय करना और पुट सेल करना दोनों सेम चीज नहीं होती है। दोनों का कंसर्न यही होता है सर कि मार्केट अप होने पे ही बाई कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं और दोनों में ही प्रॉफिट होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट क्यों है, जबकि दोनों का बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सर, बहुत डिफरेंट। इनमें कुछ भी अच्छा सेम नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक ठीक यू। है सर, कल डिस्कस करें। थैंक यू। Okay, any last questions? Any last questions? ठीक है, if there are no more questions, thank you everyone for joining in. यार जैसे ही मैं कहता हूँ थैंक यू तब एक और क्वेश्चन आ जाता है, बताएं। बताएं। Yes sir. I cannot hear you sir. I cannot hear you. Mr. Ramakrishna. Hello sir. जी बताएं। Yeah sir, actually I asked the question in the chat so you didn't answer, that's why I'm asking actually. Sorry for raising hand in the last. So my question is जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं ना वो इंटरडे के लिए भी डे के लिए भी अप्लाई होते हैं सर? Yes sir. ओके इंटरडे। और सपोज हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल करते हैं, अगेन वी टेक ए कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स दो बार लगता है क्या और एक ही बार Yes. लगता है पर मंथ? Yes. कितनी बार भी आप ट्रेड करो उतनी बार लगेगा। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you. Okay. If we have less capital, only possible to buy a call with best strike to what basis? मैंने बता दिया मिस्टर शंकर। मिस्टर शंकर मैंने बता दिया, our aim is not to trade, our aim is to make money. Correct? So I hope that answers your question. Okay. And Mr. Mane, I have already unmuted you, but I cannot hear you. Okay, great. I don't think there are any more questions. Okay, lovely. So again, thank you everyone for joining in. I hope पहली class आपको अच्छी लगी होगी. I will be sending all my documents to you on the WhatsApp group, and I will ask Rishabh to upload this recording as soon as possible. ठीक है? Thank you, and I will see you guys tomorrow at 7 p.m. Have a good night. Bye.